हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम ये टर्मिनोलॉजी आदिवासी वनवासी जो अभी न्यूज में चल रहा है, ये टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे क्या है, या ये जस्ट वोट बैंक के लिए सब कुछ चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ क्लास बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी ऑन अ मैटर ऑफ आदिवासी वर्सेस वनवासी टर्मिनोलॉजी। अभी क्लास चल रहा है रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी के ये टर्मिनोलॉजी के लिए, ये वर्ड के लिए। ये न्यूज़ में कहता है द बीजेपी डोंट कॉल आदिवासी, व्हाट यू दे कॉल्स, वो क्या बोल रहे हैं तो वनवासी। They don't tell you that you are the first owners of Hindustan. They tell you that you live in a jungle, meaning that don't wish to you live in a cities. That your children become an engineer, doctor, and fly planes. Speak in English, Gandhi said, at the rally in the travel-dominated reserves, constituency of Mohova. चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ जो इसका टर्म का मतलब क्या है, आदिवासी वनवासी और शेड्यूल ट्राइब में डिफरेंस क्या क्या है। Adivasi means the first inhabitant or earlier settlers. Vanvasi means the forest dwellers. The Constitution of India used the term scheduled tribes in English. अनुसूचित जाति in Hindi to describe tribes. Is the dispute news? ये dispute news है कि नहीं? This is the end of old debate. How should they be recognized? तो क्या कर रहे हैं? Old. Many have pointed out that tribal community does not necessarily live in a forest. During the Constitution Assembly debate, Jaipal Singh Munda, hockey player who later became the tribal representative in the Constitutional Assembly, had instead using the word adivasi and questioned why the word tribal become an banjati when they are translated into Hindi. The word adivasi has not been used in any of the translation made by the several committee. However, is it? I ask you why it is not be done. Why has been word adivasi is not used in the words banjati has to be used? आदिवासी क्यों नहीं हो रहा है, बजाती क्यों बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आवर ट्राइब डू नॉट लिव इन जंगल। बहुत सारे जो हैं अभी जंगल में नहीं रह रहे हैं वो सब। आई विश्ड दैट यू शुड इशू द इंस्ट्रक्शन ऑफ टू योर ट्रांसलेशन कमिटी दैट ट्रांसलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स शुड बी आदिवासी। द वर्ड आदिवासी हैज ग्रेस। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस ओल्ड ऑब्वियस epithet of banjati is being used of banjati for recently this means of uncivilized barbarian, he said. The Sang's Adivasi problem क्या है? According to Aryan's invention theory, Adivasi means original inhabitants or aboriginal, which implies all others from outside. Aryan invention theory में क्या बोल रहा है? That Aryans were from somewhere in Central Asia and migrated to already settled in the Indian subcontinent had already been rejected by ourselves. But the Sang believed that we all are originally inhabited of this continent. Therefore, they call of Vanvasi. The Harsh Chauhan, chairman of National Commission for Scheduled Tribes, a Sangh leaders who worked among the tribes for years, explained that the term Vanvasi was established in 1954. बोल रहे Vanvasi established हुआ था 1952 में. He said the term Adivasi or Aboriginals were more suited for the American context. The term Adivasi was brought by the British in 1930. British लाते बोल रहे हैं. This was there is no harm in using the word Adivasi, but in this context of India, it is wrong. बोल रहे इंडिया के लिए wrong है बोल रहा है. In the US, the word original is used for the tribal to get their identity because they were marginalized. But the word Vanvasi simply conveys that they are forest dwellers. तो कौन आते हैं देखिए शेड्यूल ट्राइब में। What is tribe? A tribe is a social division in a traditional society consisting of family linked by social, economic, religious, and blood ties with a common cultural dialect. A tribe possesses certain quality and characteristics that makes it a unique cultural, social, and political entity. Tribes are also known by the name of Adivasi in India. Tribes को इंडिया में आदिवासी कहा जाता है. The definition of scheduled tribe क्या देखिए? As per the census 1931, the scheduled tribes are a term of backward tribes living in excluded and partially isolated area. The Government of India Act 1935 called for the first time in the representative of backward tribes in Provincial Assembly. The Constitution does not define the criteria recognized by the scheduled tribe. तो Constitution of India इससे कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है जो क्राइटेरिया के बारे में जो जिससे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं एसटी में. The defined content in 1931 census was used in the initial years after independence.
However, Article number 366 of clause 25 of the Constitution only provides also to define scheduled tribe. Scheduled tribe means that such tribe or tribal community or a part of a group within the such tribes and tribal community are deemed under Article 342 to scheduled tribes for the purpose of this Constitution. Article 342 subclause 1. The President may, with respect to any state or union territory, and there it is a state after the consultation with the governor. स्टेट में उसको कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट जी को, किसे, गवर्नर से, बाय द पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ द ग्रुप विद इन द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रिलेशन टू द स्टेट यूनियन टेरिटरी. द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट स्पेसिफाई द कम्युनिटी ऑफ डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट. ऐसा नहीं कि मतलब एक स्टेट में अगर एक चीज़ को मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब आप डिक्लेयर कर दिए तो वो दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है. द इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता रहेगा ये. हाउ इज कम्युनिटी एडेड और रिमूव द SC/ST लिस्ट, कैसा यह होता है देखिए. द प्रोसेस बीइंग एट द लेवल ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सीकिंग द एडिशन और एक्सक्लूजन ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम द SC/ST लिस्ट. तो ऐड भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं. द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफिस इशूइंग द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द चेंज अंडर द पावर्स vested इन इट, आर्टिकल नंबर 341 to 342. तो फाइनल डिसीजन ये प्रेसिडेंट जी के पास नहीं रहता है. शुरू क्या करेंगे. द इंक्लूजन ऑफ और एक्सक्लूजन एनी कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट इज कम्स इनटू इफेक्ट आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट टू द बिल that amends the constitution scheduled caste order 1950 constitution of scheduled tribes order 1950 is provided after it passed by the both लोक सभा राज्य सभा. इसको दोनों हाउस में पास भी करना पड़ेगा, लोकसभा राज्य सभा दोनों से. उसके बाद to call a community of scheduled tribes, the government of India consider the several criteria. This include the community traditional characters, ethnological traits, geographical isolation and backwardness. ये होना चाहिए जो क्राइटेरिया है. देखिए हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑफिशियली, अभी कहते हैं देखिए. अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया as reveals in census 2011, there are set to 705 ethnic groups listed in scheduled tribes under article number 342. तो ST अभी 705 है. Over 10 crore Indians are notified as over 10 crore ST, which 1.04 crore live in the urban area. The ST constitute 8.6% of the population and 11.30% of rural population, जो ST कवर करते हैं. देखिए लार्जेस्ट कम्युनिटी देखिए भील्स है जो ST पॉपुलेशन में. फर्स्ट भील, सेकंड गोंड, थर्ड संथाल, फोर्थ इज नकेड़ा, फर्स्ट ओरानियंस, बंजारा, मुंडा, कोलीधोर, नागा एंड खोंड. इनका ट्राइबल कम्युनिटी है. मोर देन हाफ ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड विद द सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल में मध्य प्रदेश में 14% अप्रोक्सीमेट पकड़ लीजिए आप. छत्तीसगढ़ 7.5%, झारखंड 8.29%, आंध्र प्रदेश 5.7%, महाराष्ट्र 10%, उड़ीसा 9%, गुजरात 8.5%, राजस्थान 8.8%. The other distinct area in the northeastern Assam, Nagaland, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Tripura, Sikkim and Arunachal Pradesh. There is no ST population in 3 states. देखिए कहाँ नहीं है. दिल्ली NCR, पंजाब हरियाणा and 2 UT, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़. तो वहाँ पे बस नो शेड्यूल्ड ट्राइब इज नोटिफाई, अभी नहीं नोटिफाई किया गया अभी तक. मैप भी देख लीजिए आप, स्टेट वाइज है. Why the word likes आदिवासी और वनवासी आर मेकिंग द हेडलाइंस इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ कमिंग. कुछ प्रोजेक्ट निकल रहा है इसलिए, न्यू प्रोजेक्ट असेंबली इलेक्शन आ रहा है इसलिए, वोट बैंक के लिए. Tribals were recognized as the separate political constituency by the British 1935. They reserving 24 of the 1585 seats in provincial legislature. तो 24 उनके लिए रिजर्व था. This demarcation continue in the post-independence phases. Currently there are 554 seats reserved for scheduled tribe and 4109 seats in assembly, besides 47 Lok Sabha seats. However, there is not the true reflection of their electoral limit mites. Some states such as the Nagaland, Arunachal Pradesh, about 90% population and 67% tribal population respectively do not have the seat of reserve for ST. मतलब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीट रिजर्व नहीं है, लेकिन उनका पॉपुलेशन मोर देन 90% है, मोर देन 67% है, फिर भी रिजर्व नहीं है. जो ट्राइबल एलिजिबिलिटी नॉट अफेक्टेड देयर इलेक्टोरल क्वेश्चन आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में था. देखिए MP का कितना सीट बाकी रहता है लेकिन कितना फील हुआ है. MLA का देखिए
यहाँ पे देखिए हेडलाइन में दिया है 47 आउट ऑफ 545 लोकसभा सीट्स एंड 554 आउट ऑफ 4109 सीट असेंबली रिजर्व फॉर एसटी, इनके लिए इतना रिजर्व है। भाई बीजेपी पुशिंग सो हार्ड फॉर ट्राइबल वोट्स, किस लिए मतलब पुश कर रहा है बीजेपी? The tribal votes are rarely be addressed so much of attention is in the ongoing Gujarat election. गुजरात इलेक्शन था इसलिए। As such revival the Congress are traditionally being strong in constituency reserved for the scheduled tribes and candidate. तो कांग्रेस का ज़्यादा कैंडिडेट एसटी से हैं। ये न्यू चैलेंज इन ऑफ द पार्टी प्रोसेसिंग ऑफ द ट्राइबल वोट्स व्हिच आर द चीफ अरविंद केजरीवाल प्रोमोटिंग द इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी फिफ्थ शेड्यूल पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट पैसा एक्ट passed by parliament in 1996 says no government can be take action in a tribal area without the ग्राम पंचायत। विदाउट ग्राम पंचायत आप ऐसा नहीं ले सकते, इसलिए ये एक्ट पास किया गया था। देखिए अब चलते हैं, कुछ जानते हैं गुजरात असेंबली के लिए। टोटल 182 असेंबली सीट्स इन गुजरात, 27 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी ऑल्सो कॉल्ड आदिवासी। इन 2017 द कांग्रेस विन 15 ऑफ दिस सीट, 27 में से 15 सीट कांग्रेस ने जीता था। भारतीय ट्राइबल पार्टी अलायंस विद कांग्रेस एंड 2 सीट जीता था। बीजेपी विन 9 सीट्स। इन 2017 इलेक्शन क्या होता है देखिए, बीजेपी विन 99 सीट्स एंड कंसीडर्ड एज द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन गुजरात सिंस परफॉर्मिंग ऑफ 1995। द कांग्रेस वाज प्रोक्लेम्ड द रियल विनर, इट वाज 77 सीट्स एंड रेस्ट्रिक्टेड टू बीजेपी 2 डिजिट। दिस टाइम द ऑफ आल्सो द पिक्चर, हालांकि other states which have a significant tribal population also be would in the becoming a assembly election। देखिए ट्राइबल वोट बैक देख लीजिए। द स्टेट्स आर सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, छत्तीसगढ़ 30% पॉपुलेशन उनका है, झारखंड 26%, ओडिशा 24% पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश 22%, गुजरात 15%, राजस्थान 4%। देयर आर टोटल ऑफ 189 सीट एसटी रिजर्व सीट्स इन दिस 6 स्टेट, आउट ऑफ व्हिच बीजेपी विन 49 इन द लास्ट असेंबली। Among the bigger states, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, and Odisha are special focus on the Rashtriya Sevak Sangh (RSS) BJP for tribal content. The BJP rules only 2 of these, Gujarat and Madhya Pradesh. The Congress is in power in 3, Rajasthan, Chhattisgarh, and Jharkhand. BJP looking to improve the performance of ST population. The structure of tribal community in India देखिए क्या है उसका। They are the poorest than the scheduled caste as a community. According to the Global Multi-Dimensional Poverty Index 2021, of the total Indian population living in the multi-dimensional poverty, over 50% of the belong to the ST category, followed by scheduled caste and 33%. Their poor socio-economic status has been held as the principal reason for the spread of Maoist activists in geographic with a higher tribal population, despite the multitude of government programs aimed at their upliftment. देखिए हालांकि कुछ नहीं डाउन टू अर्थ में भी था। The adivasi at bottom run wrong of Indian development pyramids find out the tribal reports 2022. The tribal development reports 2022 launched by the Bharat Rural Livelihood Foundation in 2 volumes and claim the first of its kind 1947. If we look at any issue, be it sanitation, education, and nutrition, access to the drinking water and education, independence adivasi is the most deprived. बहुत पीछे हम लोग। रिपोर्ट फाइंड किया है, of the 257 scheduled tribes district, 90% of they are either forested or hilly or dry, but they are account of 80% of the India's tribal population. It further stated that during the British colonial rule, the bond between the adivasi and their relation of symbiosis with their immediate environment was adopted. After the enactment of the Forest Conservation Act 1980, the conflict came to be seen as between the environmental protection and needed to local adivasi community and driving the wish of the people and forest. It was the national forest policy of 1988. The domestic requirement of the local people were explicitly recognized by the very first time. The policy emphasizes the safeguard their constituency rights and closely associated with adivasi in protection of forest. But the movement towards the people-oriented perspective has been matched by reality on the ground. देखिए ये न्यूज़ में था। Over the last 70 years, the struggle of Indian tribal community have been multiplied, बढ़ गया है।
It has been clearly stated that constitution of that nature resources within the without the boundary of living, such as the gravel, soil, sand, slopes, forest land, rivers, springs, are community property by the village, and all the villages have community rights over the areas. All the community rights have got legally recognized under the CNT Act of FSI Act. The Chota Nagpur Tenancy CNT Act 1908 is the land right legislation that they were created to protect the land rights of the tribal population of Jharkhand. It is that the prohibited the transfer of lands in non-tribals to ensure the community ownership. The PESA Act 1996 was enacted to ensure the self-governance through the Gram Sabha village assembly for people living in the scheduled area. It recognizes the right of a tribal community who are the resident of the scheduled area to govern themselves through their own system of self-government, and also acknowledge their traditional rights over natural resources. Since independence, the tribal community have been continuously struggling against the encroachment on their land, water, forest, and language, cultural social identity. More than 22 lakhs acres of the forest lands have been acquired for the various projects in their name of development. For urbanization, the lakhs of acres land is worst for the tribal community every year. Lakh of landowners are now forced to work daily wage laborers. The tribal area have been neglected when it comes to develop in the education and the health sector. The amount of the sanitation under the tribal sub-plan is being diverted to the other hands, and money have been used in the construction of jails and roads and airports. As the result of the tribal population of bargaining over the bond of development. इसलिए वो जल्द भी रहे. The conclusion क्या है? The global policy, global capital and global market have been now replaced the traditional rights of the community with corporate interest. The welfare of government and countries now giving priority to the corporates. Adivasi and indigenous community have been integrated new phases of struggle against this policy change. The scheduled area have been declared as the backward area. The scheduled backward area declared किया with a land record digitization. The name of actual landowners have been replaced in the land record as the land of tribal farmers and Dalit is being forcibly seized to hand over to others. The tribes of India are the strip of India. Now the political parties are scrambling to turn them into the consolidated vote banks. They are fight over how to address them. बस इनको लिए vote bank बना के रखे हैं लोग political party. आदिवासी और वनवासी and with the promise to bring the greater benefit to the region of their demographic dominance. आई होप आपको ये पूरा इशू आपको समझ में आएगा. कुछ भी अगर क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा. थैंक यू.